लंच के बाद स्ट्रीम में वापस स्वागत है। मेरा नाम है केट बस 90। रात सुबह स्ट्रीम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था एक टेस्ट रिजल्ट्स वो सब दिखाने के लिए। वो सब हो गया। थोड़े बोला है कि 4 महीने में फिर से थोड़ा टेस्ट करेंगे ध्यान रखने के लिए वो सब, पर ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेरे नी में जो दर्द हो रहा था उसके लिए क्या बोलते हैं, ऑलरेडी दवाई दी हुई है। मेरा यूरिक एसिड थोड़ा हाई था तो उससे काम करने के लिए फेब्रिकेट दिया हुआ है मुझे। तो उसके अलावा और क्या क्या बचा अभी करने के लिए? कुछ नहीं ना। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, लोड ये वाला। जाके मसाको से बात Keep out of my करना। way and I'll keep out of yours. ठीक है, मैं कुछ कर रहा भी नहीं था। need that Rothosite if we want to complete the neuroamp. I'm just concerned the entire station was wiped out by something. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Veena Kalra, Head of Research and Development. वॉल्टन भाई She'll स्ट्रीम में give स्वागत you the है। initial details. ना डॉक्टर से मिलने जाना था Yes. और टेस्ट details. रिजल्ट्स दिखाने के You लिए। see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. आपका The वीकेंड कैसे second गया? part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Well, we can't, but the shielding aspect was never results ठीक officially a थे। part of Project Dominion. It was an afterthought of बोला how to कि इसे safeguard बस our own जो people from रिजल्ट्स है being उसे manipulated. थोड़ा So it ध्यान was में being रखेंगे। researched 4 separately मंथ्स at the बाद moment. फिर से टेस्ट करने को The कहा। research itself was in early stages, too early for board approval, so only myself, DeMarcus, and Masako know about it. Big time. We'd be the only ones unaffected. No one wants their greatest asset used against them. Once Veena can complete the internal neuroamp and shielding mod, क्या क्या आज the वर्कआउट में plan सुबह? is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. Of course. Installing experimental technology into your very head. What could go wrong? We expect our employees to do whatever it takes to ensure Ryujin's success. Consider this an CrossFit में opportunity, exactly क्या-क्या करते हो not a फिर? risk. Besides, you're in good hands with Veena. अरे फिर से मेरा राइट क्लिक पता नहीं क्यों हो जाता कई बार। मेरा मिडिल वाला फिंगर जो है हाथ का वो काफी ट्विच कर रहा है पिछले कल से। You're a Ryujin employee, and we need a job done. We've trusted you this far, so I feel it's safe to continue the trend. I'm willing to undergo या फिर it's about time. I'm willing to undergo. Good. That's all I wanted to hear. And all I need is the last piece of the puzzle. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called Rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the Rothosite straight to us. ये Their रूम last कितना shipment is बड़ा late, होता है जहाँ पे ये and सब neither होता we है? nor Consolidated Mining have had any communication with the Carenay station. My thoughts exactly. We need you to head out there, secure the shipment, and Room bring it कितना back बड़ा होता है here so जिसमें ये Veena पूरा can group complete the workout होता है? prototype. And
I want to know what. पिछली बार आपने कहा था कि एक We need to क्लास take में any 20-30 safety होते हैं। मैं measures सोच रहा हूँ to कितना बड़ा make होगा sure this doesn't happen. ये सब करने के लिए। स्प्रिंट, स्क्वाट्स, पुशअप्स, बर्पी, ब्रॉड जंप। Unfortunately, yes. So be prepared. Extensive tests and research were done on the planet, so the chances that this is environmental are slim. And setting up a station like this is second nature for consolidated mining, with plenty of redundancies in place to handle mechanical failures. The mining station is CM Station RC1. It's on a moon called Carinae 3A in the Carinae system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked out. This key card will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. मैं जॉगिंग फिर से शुरू करना चाहता हूँ। अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है मुझे। Be prepared. Travel to Carinae 3A. I Okay. hate to think about what might have happened on the station. चलो सीधे चलते हैं। ये मेरा अच्छे से एक जिम में मेरा अच्छे से एंड्योरेंस बढ़ रहा था। मैं क्या बोलते हैं धीरे धीरे करके अपना कहाँ जाना है क्या बोलते हैं जितना समय मैं जॉग कर सकता था ट्रेडमिल में बढ़ते जाता और फिर सडनली ये मेरा एंकल पेन वो दोनों पाँव में हो गया। तो फिर से वो जॉगिंग शुरू करना चाहता हूँ और इस बार बल्कि मैं ट्रेडमिल फ्लैट नहीं ये थोड़ा एलिवेशन का होता है ना वैसा वाला करना चाहता हूँ मैं। ओ डैम काफी दूर है ये। Always a satisfying moment to return to your ship. पहुंच गए ना कैरिने वन? यस पहुंच गए। और फिर जैसे वॉल्टन भाई आप जाते हो ना उधर क्या बोलते हैं ये 5 किलोमीटर का वो भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वही एंकल पेन की वजह से मैं धीरे धीरे एंड्योरेंस बढ़ा के वो करना चाहता था। दवाई तो मिली है वो एंकल पेन के लिए। मेरा यूरिक एसिड थोड़ा हाई है तो डॉक्टर को लग रहा है शायद उसकी वजह से ये दर्द हो रहा होगा जॉइंट्स में मेरा। तो यूरिक एसिड के लिए एक दवाई दी हुई है मुझे तो उम्मीद है उससे कम होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। पर जब तक ये पेन है मैं कुछ कर नहीं सकता अभी अनफॉर्चुनेटली। मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि पेन भी हो रहा हो तो फिर भी कर लेता हूँ क्या बोलते हैं जॉगिंग कर लेता हूँ पेन को एंड्योर करने की सोच रहा हूँ मैं। अब वो सही नहीं होगा मैं अपने एंकल को और भी खराब कर दूंगा अगर वो करने की कोशिश की तो। ओह शिट व्हाट द फक। ओह शिट नहीं 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 इसका कुछ भी नहीं कर पाया मैं। इसे बिल्कुल नहीं करने वाला। यस इसको भी नहीं रखने वाला। रम भी 4922 ना ये ठीक है। 11,000 ए अच्छा सही है। 76 पिस्टल मेरा ये करंट वाला कितना करता है 72 करंट वाले से ज़्यादा अच्छा है। वो हम वही सोच रहे हैं एक्चुअली धीरे धीरे करके बढ़ाऊँ। पहले मैं कर पाता था 1.5 आवर वॉकिंग 1.5 आवर क्या बोलता 1.5 मिनट वॉक करता था फिर 1.5 मिनट जॉगिंग। अब सोच रहा हूँ 4 मिनट वॉक करता हूँ और 1 मिनट जो है एंड्योर करूँगा दर्द के साथ जॉगिंग क्योंकि शुरू तो करना है मुझे। कहाँ पे जाना है वैसे मुझे? कोई है यहाँ पे। ओह शिट इसके अंदर जाना लगता है। Quite cold here.
यार इसके अंदर कैसे जाऊं मैं? आओ चल, और आपका कैसा चल रहा है वॉल्टन भाई? आज भी क्या बोलते हैं AC6 ट्राई करोगे या थोड़ा BL4? इसके अंदर जाऊं कैसे मैं? एंट्री का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा सही में। Someone wants to take us on. Bring it. ओ ये है क्या? नहीं। हाँ हाँ नहीं हाँ हाँ रिलोड। ये मरा। ठीक है वॉल्टन भाई आराम से लर्न करो। थोड़ा हील करना होगा अपने आप को। कुछ भी नहीं कर पाया। एक मिनट रुकना। अभी जो पेन ये वाला कहाँ गया? ओह नहीं 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 ये चलता है पर एक वाला मुझे हाँ इसकी जरूरत नहीं है। ये ड्रॉप के लिए R था ना। हाँ ये फिजिकल ही है। आवाज से ये क्या बोलते हैं फिजिकल नहीं लगता है। आवाज से ये लेजर टाइप का वेपन लगता है तो नहीं फिजिकल ही है। Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Yes, you are absolutely right. मैं ऑलरेडी नाम जिसका भूल चुका हूँ। क्या है नाम इसका? कहाँ बनती पहली बार? एंड्रेजा। Not exactly the lap of luxury, is it? Nope. रोल सीलेंट कटक रेट आओ बस ऊपर नीचे करने के लिए। इसका मॉड मुझे देखना होगा यार कुछ लगाने के लिए। इसका पापा भूल जाता हूँ। कटर में मुझे डालना है थोड़ा मॉड डैमेज बढ़ाने के लिए। यस शॉटगन शेल्स डेफिनेटली। नो 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 एडवेंचर हैट मतलब बकवास होगा। यप ड्रॉप कर दो इसे। ओके यहाँ पे एक्लिप्टिक आ गई है। उन्हें मारना है। बॉस बैटल शायद होगा कोई शायद ना हो। ओ ये है ना। यहाँ पे ये भी एक है। ओ ये वायरफुल। मैं श्योर था ये एक क्राफ्टिंग कंपोनेंट होगा पर नहीं। चलो माइन में जाना है आप। सेंटिएंट AI अडेप्टर रखता हूँ। कॉन्ट्राबैंड कैश डेफिनेटली। ओके चलो करते हैं ये।
नहीं इसका ये रहा, फिर 1 2 3 वाला चाहिए ना। हो गया ना इसके साथ सारे? हाँ, सबसे अंदर वाला हो गया। ये फिर देखते हैं, इसका 3 चाहिए फिर से। पहले ये 2 नहीं, उतना ज़्यादा है नहीं जितना चाहता हूँ। ये हो सकता है, ये और कौन सा था ये। ठीक है, सबसे बाहर वाला भी हो गया, सबसे अंदर वाला भी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बीच वाला बचा है। ये हो गया सही में, इतना आसान था। चलो ठीक है, करते हैं ये सिंपल था ये। ओह डैम, मास काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, पर चलता है। काफी पैसे भी मिलने वाले हैं। किसने मारा मुझे? Good. Okay, यार oh shit. Okay, यार ये दिख रहा ही नहीं है। oh यार आप वो जल्दी shit, heal. जा मार। ओके ओके यार, मजा आता है इनके साथ करने का, मजा आता है इस्तेमाल करने का ये पिस्टल को। पर वो ये इसका रिलोड स्पीड इतना स्लो है। जा हाँ तुझे दे दूंगा, टेंशन मत ले, तू वो सब लेने वाली है मुझसे। Cowards. हेल्थ वाले सारे अभी ले लूंगा। ओह फाइनली आ गया। We are not alone. हाँ मालूम है। कैलिबर 8900 बिल्कुल जरूरत नहीं। और इसके पास मेरे हिसाब से ओह 1 से ज्यादा है। मुझे लगा था इसके पास सिर्फ यही होगा, क्या बोलते हैं, एक्स, पर नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे पास वैसे वाला ऑलरेडी है, O2 वो करने का। और उससे याद आया, Yes? What have you got for me? इन्वेंट्री डाल दो सारे डाल दो जो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। 242 वो सब नहीं है। बेशुद्ध भी सारे, पैक्स भी सारे। 176 एकदम सही। Very good. ओह इसका भी है। नहीं ये नहीं। ओह शिट, मैंने उसको दे दिया क्या वो? यस, माफ करना, पर मुझे वो वापस चाहिए। कहाँ पर है बंदी? Ah, hello. I keep what...
कहाँ पे है ये? नाम क्या था उसका, याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैग शॉट, यस। I have never been one to shy away from shouldering my share of a heavy load. ये क्या बोल रही थी, मैंने पढ़ा नहीं है एक्चुअली। आई कीप कुछ, मैं वो फिर से सुनना चाहता हूँ। Did you need to see what I'm... छोड़ो यार, फिर कभी सुन लूंगा। Back to it then. ओके, जल्दी से इसको यहाँ पे डाल दो आप। वो दूसरे वाले को मैं बेच दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज करता है। ओह, नाइस। तो फिर ये कहाँ लेके जाता है? कोई नहीं, बस उधर तक जाने के लिए मेरे हिसाब से। वो तो यहाँ से ही डायरेक्टली कर सकता हूँ। Reddit, light particles, nova light, yes. इसका अच्छा था यार, एक शॉट में ही, दो शॉट में मर गया ये। आ गया ये। Holy shit. एमो खत्म, वाह भाई वाह। सही बोलूं तो ये उम्मीद नहीं कर रहा था एमो खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा सही में। मुझे लॉन्ग रेंज के लिए कुछ चाहिए अभी, पहले इन्हें मारने के बाद। ओके ओके, यहाँ पे कहीं है। Best not to leave anything useful behind. हाँ, इसके पास, यस, इसे रखूंगा। 3 हेल्थ, 4000, इसकी जरूरत नहीं है। बैग ग्रेनेड ऑफ कोर्स ये, पर इसकी जरूरत नहीं है। शिट। यहाँ पे तू लड़ते हुए उधर से, मैं यहाँ से जाके मारता हूँ। भाई गैरेज था क्या वो दो जो मुझे मार रहे थे उधर से? उसे किस तरह लग गई। अपने आप को हील करो, गलत बटन दबाओ। I cannot wait. सही में ये कैसे टाइप का प्यार है? शिट, और इतना ज्यादा सही में हिलता है यार।
कुछ भी है, इसको पकड़ तक नहीं पा, हैंडल भी नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉइल को। ये देख, जैसे इसको नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं, जैसे कंसोल में होता है रिकॉइल, वैसे टाइप का रिकॉइल है। कंसोल में कॉन्स्टेंटली हम नीचे रख सकते हैं, वो इसको नहीं कर सकता वैसे। Ryan, resource 10 health, ये जरूरत नहीं है। हाँ ओके, कैलिब्रेटेड ग्राइंडर जरूरत नहीं है इसकी। वहाँ पे कुछ है इसका, जो भी है, या एटलीस्ट वो अभी का चेक पॉइंट है। ये कुछ, ओह नाइस नाइस, एपिक राइफल। राइफल वो देखना होगा बाद में। ओह शिट, ये अच्छा है कि गेम ये ऑटो इस्तेमाल कर देता है मेड पैक को, वरना मैं पता नहीं कितने बार मर चुका होता अब तक। नप, उसे बिल्कुल भी नहीं लगा। या डेफिनेटली ले लो। और हाँ, यहाँ पे ऊपर कहीं था ना, उससे भी लेना है मुझे। स्पेस सूट नहीं, क्या रखूं पता नहीं अभी। मिल्क, एमो, ये डेफिनेटली रखो। ट्रॉमा पैक भी देखना है, उससे क्या होगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है ना, तो फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये हमारी जो माइनिंग, रियूजन की जो माइनिंग कंपनी है उसको हुआ क्या। यस, यप, डैम, 3000, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं चाहिए। सबका वही होगा मेरे हिसाब से, सिर्फ एक 3000 का, बाकी सारे बकवास। I also wish to be prepared for any situation, but there are practical limits, no? हाँ। अभी के लिए न्यू आइटम्स में जाओ, हेल्थ वाला सब कुछ ले लो। पाँच सुपर पेस्ट किट कुछ है ना, 10 हेल्थ। और एड में भी जाके ले लेता हूँ यार, अभी एडिक्शन का मैंने क्लियर कर दिया। अभी एक मिनट, मैं देखना चाहता हूँ ट्रॉमा क्या है। पहले ये ले लो सारे। ये ट्रॉमा पैक मुझे बहुत मिले हैं। चिकन टिक्का, CBQX 25 मिले डैमेज, प्लस 25 मिले डैमेज। मिले पर मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए कुछ नहीं है वो। ट्रॉमा सीधे नीचे उतार दिया। और हिपोलिटा भी काफी मिला है मुझे वैसे, पर्सुएशन के लिए हिपोलिटा, ठीक है। हिस्ट्री, ट्रॉमा पैक,
7% health for 5 seconds. हमें क्या? Oh, 7% health per second है ये. Oh shit. Definitely बहुत अच्छा है ये. और ये ग्रेनेड्स भी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर. Please. Shit. Oh, पता नहीं कहाँ गया ये. उसे लग. आ गया वो. Shit. Oh fuck. ये इनके खिलाफ उतना अच्छा नहीं है लगता ह्यूमंस के खिलाफ. Oh shit. यार कहाँ भाग रहे हैं? बहुत कम डैमेज कर रहा है. इसके जगह कुछ और रखना होगा मुझे. Value 1 5000. 12127. शॉटगन है. रीड द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, रीड करूंगा. पहले ये 5 kg बढ़ा देगा इससे. मैं ओवरबर्डन होने वाला हूँ गारंटीड. पैरामाउंट ठीक है. 10,000 गारंटी ओवरबर्डन हो चुका हूँ मैं. अभी भी नहीं हुआ. अभी भी काफ़ी कम दे दिया था मैंने उसे लगता है. यहाँ पे इन दोनों से देखता हूँ क्या क्या कुछ अच्छा है क्या. 4260. Did they have anything of value? 12,000. ओह डैम, फिजिकल हैवी है ये. 130. शॉटगन अभी भी फिर भी मेरा हिसाब से वो सबसे ज़्यादा है शॉटगन. तो वो बुरा नहीं है. ये communications. Ryujin, your inability to adhere to schedule or communicate complications is unacceptable. We'll be sending out a representative to secure the shipment. We expect it to be ready and waiting by the time they arrive. We've heard reports that the shipment is late. So much for that bonus. We'll be sending out a representative your way for updates and evaluations. That's great news, RC1. Perhaps you'll get lucky and Ryujin will toss in a bonus for early delivery. Keep us... Okay, नीचे से शुरू होता है. Rotisite shipment is on schedule. Raw ore processing begins today. Engineers estimate 2 days for the refining and quality testing. Where refining and quality testing went faster than originally estimated, preparing shipment 1 day ahead of schedule. To anyone in the Carine system, this is Consolidated Mining Station RC1 on Carine 3A. We are under attack by hostiles and require immediate emergency assistance. उसके बाद ये इसका रिप्लाई है कि जल्दी हो गया. फिर अगला है कि शिपमेंट लेट है तो उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा, मोस्ट प्रॉब्ली जो मर चुका है. और फिर ये रीजन का है कि हम भी भेज रहे हैं. $1.5 kg delivered. Cancelled. Shipment redirected to the clinic attendant Dr. Kendrick Lane. 2.3 ton delivered. इन्हीं को 1.5 kg और ये कितने का था? 1.5 kg. किसने कैंसिल किया? तो अब कहाँ जाना है? इधर से. Back. Oh.
Credits, crafting. इसे देखा ही नहीं था. इसे भी मिस कर दिया मैंने. इसके एमो मिले क्या थोड़े? हाँ. 24 हैं उसके. Is something amiss? That is all. Very well. उससे बात नहीं करना चाहता था. मैं ये खोल रहा था. ओह यस. और यहाँ पे एक और वो क्राफ्टिंग का कुछ सेमी मेटल वेपर. ये भी क्राफ्टिंग के लिए चाहिए. ये हेल्थ के लिए चाहिए. और कुछ है नहीं तो यहाँ पे चलते हैं. रीड द कॉन्ट्रैक्ट. एक कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था क्या मुझे? नोट्स. Client Infinity Ltd. ठीक है. CM retrieve rotisite shipment being prepared for redirect shipment to the clinic attendant. Dr. Kendrick Lane, Narion System, Freestar Collective, leave no witness. Leave no witnesses? Okay. ये leave no witnesses वाला काय को यार? उन्हें चाहिए था, पैसे दे देते और फिर इंतजार करते. हम ये र्यूजन इंडस्ट्री का क्यों लिया? ओके. चलो चलते हैं. Any adventure you can fly away from. क्लिनिक में जाना है. नारियन सिस्टम में. ये रहा. You are cleared to dock at the clinic, the best medical facility in the settled system. बोर्ड. और अब मेरा वापस दे दो सब कुछ. अब जा सकते हैं यहाँ से. This area is off limits. Authorized personnel only. Yeah, I bet you do. You can't just. I must be hard for you to say no all the time. I'm not falling for that. You're not getting past me. Get. You think you scare me? Yeah, okay, I get it. Oh, पता नहीं कैसे हो गया Fine, वो. I'll issue you an access card. Infinity better get it together. कैसे हो गया पता नहीं. Sean, I don't want to go over this again. I'm tired, all right? Just not today. You can't be okay with this, though, right? You took an oath, and I'd say this is a firm violation. Look, we got that shit. Although who knows what Faye expects me to do with it. But maybe approvals really are on the way. Now please, get back to Kai. Make sure his vitals are stable. I don't want to lose him. We'll figure this out. I promise. Fine. But if we lose Kai, that's it. I'm going to SSNN. I don't give a shit about my career anymore. You and me both. अभी क्या करना है? Retrieve the what Infinity Ltd is doing at the clinic. Howdy. Okay. We better get that approval soon. Refined rotisite shipment. से इससे बात करते हैं. Excuse me, but this is a restricted area. You need to leave. Nope.
Your timing could be better. A little warning next time. I'll just take a moment to check up on my patient. ठीक है, निकल फिर। निकल जा, निकल, निकल। ओके। प्रोजेक्ट डोमिनियन छोड़ो, पर्सनल लॉग्स पहले शुरू करते हैं। Kai's results were initially so promising, but now the poor kid is in a coma. I thought surely he would be the light at the end of this grisly tunnel. We have now gone through our entire list of subjects, and I dread the idea that Infinity will just sign up more. What is going on over there? Ms. Faye completely lost her mind. I understand when corporations rush things when it comes to household products or maybe office software, but not something that will endanger the lives of others. This internal neuro amp may as well be a murder weapon, and I'm the one with blood on my hands. Contracts aside, I'm certain this will end in ruin. Okay, कुछ ज़्यादा यही है। Okay, हमेशा की तरह नीचे से स्टार्ट हो रहा है। A8, name Osmia Leonhardt, status deceased. Version implanted 3.0. Experimental alloy titanium grade 120. Initial procedure appeared successful, but signs of edema began approximately an hour after the surgery. Initial attempts to stabilize through the med pod failed and condition worsened rapidly. We began surgery prep, but A08 experienced complete brain failure before we could operate. Okay. ये भी deceased और ये Kai Porter, coma. Initial patients reported no changes for the first 4 days. Brain waves were normal. Cognition tests were 100% across the board. Testing the neuroamp on day 5 appeared to bring on severe headaches with eventual brain hemorrhaging. Neuroamp was removed to prevent that, but patient is currently in a coma. Welcome to the Infinity Ltd fold. We hope you'll find a breakthrough research we need to perfect Project Dominion. You came highly recommended by Faye Seng Savan, our head of research and development. So we are excited to have you with us. I understand your concerns on these human trials being unauthorized, but I assure you, this is just a minor hiccup. I've been told we are only a few days away from approval, and we'll get those documents to you as soon as possible. Please remember that all subjects have signed waivers accepting the risk. I hope this will ease any hesitation you may have. The end will justify the means. Never a good justification. The end justifies the means. Project Dominion requires a compatible alloy that the human brain will not reject when the internal neuroamp is surgically implanted. Find the correct alloy ratio. A series of metal have been provided for a wide range of experimentation. We are currently looking into obtaining a rare metal to be delivered at a later date. Ensure the effectiveness of the internal neuroamp. Once implantation is successful, ensure the neuromap can be used effectively. No side effects should be detected for either the user or the target. Minimize casualty. Infinity Ltd understands that severe injuries and even fatalities may be encountered. Do not let issues hinder research progress. Notify your contact and we'll take care of it. Okay. Not everything in the galaxy needs to come with us, you know. हाँ मालूम है। निकलो यहाँ से। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा अपने उससे बात करना होगा। You're out there a lot, right? In space? Hey, just do us all a favor and never turn into one of those spacers. मुझे अरे यार इसमें वो नहीं है ना। Good. ये क्लिनिक है। मुझे जाना होगा। ये हो जाए। इसके दूसरी साइड में एक होना चाहिए वो। एक और नहीं। ट्राउड एक्लैंड स्टार यार्ड। शायद यहाँ पे हो कुछ। मुझे बेसिकली अपना चेंज करना है शिप को, क्योंकि इसके पास शील्डिंग नहीं है शिप में और मेरे पास कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्राबैंड चीज़ें हैं जो मुझे छुपाना है। उम्मीद कर रहा हूँ इसमें बस पार्ट्स खरीदने का नहीं, अपग्रेड करने का भी होगा और प्लस शिप चेंज करने का भी ऑप्शन होगा। होना चाहिए सही बोलूँ तो।
I think you'll find we have some... Nice to see you again. How can I help? A wise choice. Okay, इसका एक मिनट 985 है ना, और इसके उसमें 830 है. डेफिनेटली बढ़ाना है इसका. Stroud Eklund may be new. Oh, you... मेक होम नहीं, अभी नहीं. अपग्रेड शिप नहीं, शिप बिल्डर. अटैच कार्गो, ये रहा एक, ये फिर कंट्रोल जी यहाँ पे कर दो. इम्प्रूव इंजन्स, हाँ. इसे डिलीट करो. जी नहीं, इंजन और ये रो. लैंडिंग गियर है ये, इंजन नहीं है. कहाँ पे डालूं इंजन? और डिलीट जी. क्लास बी अभी कर नहीं सकता हूँ, ये हाईएस्ट ही है. इससे ज़्यादा ये बी होगा जो मैं अभी कर नहीं सकता, तो वो उतना ज़्यादा भी नहीं है. क्या? नहीं जी. एक से ज्यादा को कैसे कंट्रोल करो? इसको करते जाओ. हाँ, इसको डिलीट करो. जी डॉकस नहीं, बे 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 बे. ओके, ये है क्या? पैसेंजर स्लॉट का ही है ये. जी हैबिटेट, हाँ हैब चाहिए मुझे. ओह डैम. ओह ये सही है, मैं इसे बताना चाहता हूँ. इसको डिलीट करो. जी यस. पर वो इसका ही बस प्रॉब्लम है यार. इस ये वाला, एक मिनट रुकना, यहाँ पे गेयर नहीं. कॉकपिट, बड़ा वाला कॉकपिट चाहिए, ये उसके बिना नहीं चलेगा यार अनफॉर्चुनेटली.
बड़ा वाला कॉकपिट बाद में मिलेगा मुझे। कार्गो नहीं, डॉकर्स नहीं। Oh, habitats. अल्फाई, ये और इसमें डिफरेंस क्या है? 3-in-1, 2-in-1 A, तो वही है। कंट्रोल जी, इसको करो पूरा। और फिर यहाँ पे लगाओ एक और इंजन। ये एक करो। कंट्रोल जी, लैंडिंग गियर। हाँ ठीक है, यहाँ पे लैंडिंग गियर लगाता हूँ। कार्गो बेस नहीं, लैंडिंग पे। क्या चाहिए? लैंडिंग गियर ना? हाँ, लैंडिंग बेयर नहीं, लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर कहाँ है यार? हैव ग्रैब दैट्स गियर, लैंडिंग गियर। कंट्रोल जी। लैंडिंग पे का है अब। और गेट मान में क्या? ये भी नहीं है। ओ, इसको थोड़ा नीचे चाहिए यार। प्रॉब्लम वो है, इसका उतना हाई नहीं है। लैंडिंग गियर डिलीट करो जी। अनफॉर्चुनेटली इसका बकवास है, ये पूरा का पूरा बकवास गया। मैंने ये पूरा किया था, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सही में इनके पास बस यही है। एक मिनट रुकना। ओ नाइस। कार्गो, ये कंट्रोल जी। अभी के लिए एक ही लगाता हूँ। यस, एक्सेप्ट।
और मेक दिस होम शिप। थैंक यू। कार्गो होल्ड। मेरे इन्वेंट्री का मिसलेनियस का है, इसको डाल दो पूरा, और इसको भी पूरा डाल दो। ओके, अब चलते हैं। यहाँ पे वापस जाओ। Oh shit. ओके, पहले यहाँ पर तक ही जा सकता हूँ। I mean, ठीक है, कुछ भी चलता है अभी के लिए। उसका इंजन ज़्यादा अच्छा करना होगा शायद। और धन्यवाद, कोई लड़ाई के लिए नहीं आया। और अब यहाँ चलो, इधर, और नियॉन, यस। ये लैंड का ऑप्शन इस बार नहीं दिया, मतलब मुझे वो 2-3 सेकंड रुकना पड़ेगा वो स्कैन के लिए। लकीली कॉन्ट्राबैंड का मैंने रखा हुआ है। Welcome to Freestar Space. We're gonna do a quick scan for contraband and you can be on your way. Good. कॉन्ट्राबैंड का 65% चांस है, पर फिर भी पकड़ा जा सकता हूँ, संभल के रहना होगा। यस, कॉन्ट्राबैंड है, उसके वजह से ही मैं डायरेक्टली वो लैंड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलो उम्मीद करता हूँ यार, उम्मीद करता हूँ स्कैन इवेट कर दूंगा। 65% चांस है, 65। This is Freestar Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. That's all we need. Enjoy neat. Thank you. अब सबसे पहले जाके मैं उससे बात करूंगा, फ्री ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। Let us stick to business here, and hopefully business has nothing to do with Aurora. यहाँ पर ही कहीं पे मैंने फ्री ट्रेड शायद इधर अंदर है। Inside's a bad place for tourists these days. Elevator. ये सही नहीं जा रहा है। फ्री ट्रेड अथॉरिटी कहाँ पर है? इधर है क्या? नॉप। फ्री ट्रेड अथॉरिटी कहाँ पे देखा था मैंने? मुझे याद है मैंने यहाँ पे एक देखा है। बहुत है मेरे पास, थोड़ा इस्तेमाल कर लो।
ठीक सामने ये है। If it's too hot to handle, we can take it off your hands. Yeah? Buying, selling, or moving. Buying, selling, or moving. Alright, smartass, let's cut the bullshit. You either walked into the TA to buy some goods, sell some goods, or have some liberated goods taken off your hands for a reasonable price. So, instead of wasting my time making me explain how the business world works, let's get a move on. मार्स वाला बंदा ज़्यादा अच्छा था। Now that's what I'm talking about. We both want to make some money, so what'll it be? Well, first of all, the outpost in Neon is hardly anything to be worried about. They have what, like 4 men covering the entire city? Come on! And even if one of them got, I don't know, suddenly ambitious and put the heat on us, well, there are 2 ways to solve that problem. One way is to leave an unattended cred stick on the counter. The other is to give Sayoka a call. Either way, it's business for us as usual. अभी नहीं। Yes, let's. रिसोर्सेस नहीं, सॉरी, मिसलेनियस। ये हो गया और दूसरा वाला कैमरा। नहीं, एक को नहीं बेच पाऊंगा मैं। Too bad. All right, buzz off. Busy. यहाँ पे कहीं पे बैठ सकता हूँ क्या मैं? या अभी मैं पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ सीधा। बाबा नहीं आना चाहता मैं। डी और अब 48 आवर्स वेट करते हैं। $48 आवर्स वेट करो 24 घंटे। ओह 1 मिनट। लोकल आवर्स 48 करना होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये लोकल ही रहता है, सही है। इसका मालूम है क्या, जब 1 घंटा होगा तब मालूम पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा स्लोअर है। One local hour is 1.5 hour normal, apparently. अब फिर से 24 और घंटे। Seventeen and a half hours ना। 1 hour is 1.5 hour लगभग, मतलब 32 है ऑलमोस्ट। तो 12 hours 17 and a half hours होगा क्या? नहीं, उससे कम होना चाहिए। I'll job you. अब बच्चे कुछ चीजें भेज दे देता हूँ। Something. Yeah, what? You got the money. और ये बेच दिया। रिसोर्सेज नहीं, हेलमेट्स बेचो। मान में क्या, एपिक के नीचे कुछ नहीं रखूंगा मैं।
पहले इन्हें बेचो। और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बेच सकता अभी इसको। तो कितना हो गया? 276 अभी। अरे हाँ, क्योंकि मैंने इससे कुछ नहीं बेचा ना अपने। जो भी हो, अभी के लिए ये क्वेस्ट खत्म करते हैं। ये इतने ज़्यादा नए नए खुल गए हैं फ्लोर्स, पर अब तक टायर इंजीनियरिंग और आर्बरॉन का नहीं हुआ है, या ट्रैंक्विलिटी। आर्बरॉन और ट्रैंक्विलिटी था या कोई और था, जो भी हो। 2 फ्लोर्स जो नहीं गए हैं अभी भी। We're wasting time. Vina needs that shipment. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. So I've heard. Now I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. Nice to catch So, you in the office. what did you learn about CM Station RC1? Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothosite. Were there any survivors? Our station on Carinae 3A and Consolidated Mining's contract were both confidential. We had no reason to believe they'd be under any threat. Of course, we had no reason to believe we had a mole, either. Corporate culture may have its ugly side, but that doesn't mean we've lost our humanity. Our moves are strategic and precise, as you should know. The moment we justify the slaughter of innocents is when we go from competitive to criminal. Good. I may not condone murder, but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic. Especially after massacring innocents working for us. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? ये डॉक्टर केंड्रिक लेन को उसमें डालूं कि नहीं? चलो यही बोलता हूँ। I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure wing? Yes, absolutely. The clinic serves all, but it can't be denied that they require credits to run. In most cases, the clinic is also the best choice for research. Not everyone has the resources to have decent medical facilities like us on site. So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. Infinity appears to be on an entirely different level of corruption. Cannot be allowed to continue. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rothosite secure, it's almost time for us to make our move. Not long, according to her. She and DeMarcus have everything prepped and ready. I believe it's just a matter of creating the alloy and molding it according to her design. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting, and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion. Ooh, 250 XP.
तो फिर भी लेवल अप नहीं हुआ। 4800 क्रेडिट। अब वो मॉल से याद आया, मैंने ऑनलाइन चेक किया, अगर हम वो जाके उलारू चेन को कन्फ्रंट करते हैं ना, तो वो कंफर्मेशन मिल जाता कि वो मॉल है। मुझे मालूम था कि इमोजन नहीं होगी। उलारू जब उसने बोला ना, उलारू ने मुझे पेंट किया है एज अ मोल, मुझे यकीन था, स्पेशली क्योंकि वो जो मैंने उसका पढ़ा था वो लंच के बारे में, उससे ही मुझे डाउट होने लग गया तब से ही। Don't wander into any restricted area. Good. You're right on time. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. So this clears Imogen of wrongdoing. Good. मुझे नहीं लगता। In due time. I'll be reaching out, but right now we need her to remain in hiding. Yes, you made the right call. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogen was the mole, and the situation was dealt with. I can understand the need for deception, but it does come at quite a cost. इमोजन के बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। Imogen is a resourceful woman. I have no doubt she's in a safe house of her own design. In fact, she probably sees this as a paid vacation. My guess is she's lounging on a couch somewhere, binging all those movies she hasn't had time to watch. Understood. It's a means to an end. We'll make sure Imogen is properly exonerated and welcomed back with open arms if this plays out our way. Masako has tasked Ularu with writing the program to bring down Infinity Ltd. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program, so this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity, so before you go, I want you to bring that program to me. If I can't find hidden code on a single slate, I certainly deserve to be fired. Ularu is limited in what she can hide here. Plus, she'll have no reason to believe anyone will be looking in the first place. वो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा डायलॉग जो है अलग होता अगर हमने उलारू को कन्फ्रंट किया होता। Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion, I have no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. कॉन्फ्रेंस रूम। तो ये वही है। हाँ, ऊपर से मैं एक बार नीचे गिरा था यहाँ पे, जब पूरा छुप छुप के मुझे पूरा करना था। Masako, Ularu-chan. नाम भूल गया, नाम भूल We गया, नाम भूल called गया। you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogen Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Dalton, how does something like this happen? Imogen is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best.
So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget, the mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Maybe someone should be keeping better tabs on their employees. बोलो या फिर we can't blame them. Watch me. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority the experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. ये दोनों मैं बोलना चाहता हूँ, पर ह्यूमन ट्रायल्स ज़्यादा, दोनों के दोनों बुरे हैं यार. इसमें भी इनोसेंट को मार दिया, इससे भी हो गया. I can't imagine the mess their legal department has on their hands. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Misako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. And that's precisely why I know we can count on you. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. देखें ये इंटरनल न्यूरोएम्प से हमें क्या फायदा होगा. There were more hours in the day. खोलूं क्या? ना, छोड़ो. सीधे चलते हैं अब नीचे. They know how to make a climb. ये पूरी जगह जहाँ पे मैं. You okay? You left pretty fast. I'm fine. Ryujin has certainly taken time to craft an appearance for itself. Literally. Was your first test run? Could have been worse. Yeah, I just need a few minutes to sort myself out. And let the smoke settle. That smoke's long since cleared. It's the smell that's lingering. But it's no worse than that time Bezzy singed off all his facial hair. Oh my god. And we still give him hell over that. Thanks for cheering me up. Yes? Hello. Double check those Neuroamps are fascinating, are they not? I'm still surprised they have not been completely outlawed. Ah, here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. Yes, I am. The internal neuroamp is basically the next leap in our line of influential amplifiers. It gives the user dominion over a less dominant target, meaning you can heavily influence another person's thoughts and actions. Technically, that remains to be seen. It's not legal, but those decisions will be left up to a higher power who is neither you nor me. Oh yeah, it gives Ryujin Industries a huge advantage over the competition. So, are you ready to get started? Neurosurgery is my specialty. I've performed more operations than I can count on a wide variety of brains. So I like to think that I'm wildly overqualified. Really, I could do this in my sleep. जानना चाहता हूँ क्या होगा. Yes, I always love a willing subject. Now, just a few details before we begin.
Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. There's little to no risk, assuming your brain is typical and you don't have any adverse reaction to the anesthesia. First sign of trouble, we back out and start evaluating other candidates. Of course. We've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. If this has not all been a horrible miscalculation, then we will speak again soon. Okay. Neurosurgery operating table. Key, screen dark. All right, let's get this party started. Up dark. Well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. So, how are you feeling? You look good? That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Let's just say it varies based on the user. Some people have greater mental capabilities than others, which would increase the duration. कोई एक skill होगा. Now that's something to talk to the drone engineers about. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. Okay. Our preliminary testing was rigorous enough that there's little to no risk involved here. The biggest unknown was finding the perfect compatible alloy for the implant. We've had the tech itself working externally for quite some time. That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Okay. Warning. This unit is not suited for addressing mental health concerns. देखे तो ये skill कैसे इस्तेमाल करना. Relax. This experiment can't go worse than the last one did. Okay, same बंदी नहीं है. Okay. Press F to enter your scanner and target the person you want to manipulate. Press E to bring up your social skills and select manipulation. Once a person has been manipulated, select the object or person you want them to interact with. Diplomacy, instigation, intimidation, manipulation are all social skills that you activate while your scanner is up. Hover your cursor over the target and press E to bring up your social skills. Select which skill you want to use with the mouse scroll wheel. If you fail a social skill, your target will be immune to all future social skill attempts. Okay. नहीं. Activate. Okay.
Social. Activate. अबे यार. Activate. Oh, okay. Oh, not bad, not bad. Hold there. ये जल्दी से इस्तेमाल कर ले यार. Oh. You can't do that. मुझे खोलना होगा क्या यहाँ से? क्या मतलब can't do that यार? Oh, ऐसा है, ठीक है. Activate. क्या? Oh. Activate. Move. और फिर social activate. अबे यार. Unlock. मुझे एक जगह से हिलना नहीं है इसका मतलब. As an observer, the effect is quite unnerving. It is hard not to immediately worry about the implications. Okay. Oh my god, that was incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Well, I'd leave that up for Alexis and Lyndon to decide. Compensation's not really my thing. Well, luckily that isn't up for you to decide. I hope you know, you're talking about banning my life's biggest accomplishment. I'd even go as far as to call it the settled system's biggest accomplishment. That's something Ryujin isn't going to let go of easily. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. Those are the kind of edge cases that I let the board work out. Obviously, tech like this is going to come with its fair share of red tape. Maybe that's the beauty of it. You'd never know. Besides, the Neuro isn't total control.
If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete, and DeMarcus and I have a lot of notes to record. I can't believe Vina finally pulled it off. With my help, of course. ये असली दुनिया में या तो एक मिलिट्री सीक्रेट होता और अगर ये क्या बोलते हैं पब्लिक में क्या वो पब्लिक हो जाता तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इससे लीगल वो सब कर देते। पर वो ये करंट वर्ल्ड नहीं है, फ्यूचर वर्ल्ड है जहाँ पे एक वाइल्ड वेस्ट सिटी है, एक साइबरपंक सिटी है, एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सिटी है। Watch your fingers. Lots of dangerous machines around. और भी मैं कोई एक मिस कर रहा हूँ, दिमाग में अभी आ रहा नहीं है। ये 3 में गया हूँ एटलीस्ट, वाइल्ड वेस्ट, रेट्रो फ्यूचरिस्टिक और साइबरपंक। अभी करेंटली साइबरपंक सिटी में हूँ और साइबरपंक में तो ये सब होना सही है, ये नॉर्मल है साइबरपंक फ्यूचर में। I wasn't sure how accurate Vina's promise of no downtime was going to be. Let's just hope her promise of no brain damage holds true as well. मुझे ये चाहिए, क्रेड स्टिक। Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. And wish he shall, every day, while he rots away in prison. All right, Yuko has provided a layout of Infinity Ltd. You have 2 options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Option A, you need to remain under the radar the entire time. Option B, you have a slight cover that may give you the opportunity to talk your way to your objectives. Of course not. The meeting is just a legitimate way in. Once inside, you'll be led to a waiting room, where your host will be running late. That's your opportunity to make your way to either the executive floor or R&D. Acting skills, persuasion. Just hope those acting skills don't get you caught or killed. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Drexler's computer, located in his office on the executive floor. Second is Faye Sengsavan's computer, in research and development. And third, you need to obtain the prototype they are working on, also in R&D. As you can see, you've several floors to traverse, so I hope you're prepared for an adventure. You'll only have free range on the marketing floor. Infinity may be cheap, but they know at least some level of security is needed in this business. That's what we're counting on. Now, I had Ularu create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. You see, once we expose Infinity Ltd., all of their data is going to come under intense scrutiny. We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials, but Project Dominion needs to remain confidential.
I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Anyone who comes forward to defend Lucas would be prosecuted as either aiding or being an accessory to these crimes. They all know career suicide when they see it. As for Lucas himself, if he wants to speak up and add corporate theft to his laundry list of crimes, fine. But who's going to believe him? It is best to keep the public unaware of such a device. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. Understood. No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Lower the risk. Simon Rychek provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. I'm told security has masks to handle the situation, so the guards will still be stationed in the building. It's also possible they'll activate their building's defense system as well. You may run into a few automated turrets, so you'll still want to try and stay out of sight. If the information Simon provided is accurate, you can reach the control systems through a computer located in the maintenance area. It's a pretty convenient stop if you enter in through the roof access. My thoughts exactly. We're also issuing you an operative suit. It should help reduce their ability to detect you. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as possible. And that's what we're hoping for. If you can pull this off, even I'll be impressed. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem necessary on their own to confirm the story. Ularu assured me it's safe. The Overseer program will purge itself once its primary function is complete. The only thing left on that slate will be proof of Infinity's crimes. It doesn't matter what he believes. David's first move will be to verify the information you provide. Once he receives confirmation, which he will, he'll see it as his duty to report the news. It certainly will, and we'll have front row seats. So, any final questions before you go? You'll be restricted to the marketing floor. An appointment is not a free pass. You have the ability to manipulate others. If someone's in your way, you could get them to move. If someone has a keycard, that means you have a keycard. The possibilities here are really up to you.
Depending on whether or not you evacuate the building, you'll mostly be looking at security guards, much like we have here. You may encounter an automated defense system in the form of turrets as well, so be careful. टैरेट्स को मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है ना, ऑलरेडी सुन चुका हूँ. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access, so that's your ticket in, either way. Don't screw this up, Skylar Lumen. चलो पहन लेते हैं ये. ऑलरेडी पहने क्या मैंने? नहीं. ऑपरेटिव सूट. नाइस. ये एक्सपाई की तरह जाके मीटिंग में जाऊंगा उनके. क्या? ओ डाल्टन से बात करनी है पहले. ओके. Do you have the program? I'm certain Ularu won't pass up this opportunity. So, let's take a look. Aha! The decryption's hit a snag. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Ularu intended to plant false evidence that would show Masako was working with Lucas. The moment you launched the Overseer program, a series of fabricated communication files would have been uploaded to the Infinity Ltd network. One of them even frames Masako for encouraging Lucas to push for early human trials. So it is clear what she intended. Now all that is left is to decide what to do with this information. I'm going to copy the necessary files off this slate and issue you a new one. I want to keep this one intact, so Ularu can't dispute it. All right. Now, we finally have the evidence we need to prove Ularu's guilt. Then it is time we use it. There's no doubt. Should you have even noticed the upload, the program itself is designed to ignore any stop commands. It would have been too late. Yes, I'm looking forward to putting this all behind us. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Let's get this assignment finished the right way. चलो. Ooh, New Atlantis. Okay. वापस उधर जा रहे हैं. कहाँ है न्यू? ये रहा. अल्फा सेंटोरी. और इसका न्यू एटलांटिस. फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता. एक मिनट रुकना. कार्गो रिसोर्सेस नहीं कर सकता यहाँ से अनफॉर्चुनेटली. पूरा जाना होगा चल के. अरे एक बार वो लिफ्ट से ऊपर चले जाऊं लैंडिंग पैड में, फिर उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें सारे के सारे रिसोर्सेस उसमें डाल दूंगा. क्या बोलते हैं
अपने शिप में और फिर फास्ट ट्रैवल करूँगा सीधे एटलांटिस, लैंड कर दूँगा बल्कि, क्योंकि मेरे पास कोई वो भी नहीं है, कॉन्ट्राबैंड भी नहीं है, तो सीधे लैंड कर पाऊँगा। और अब सीधे यहाँ पे चलो। और लैंड कर दो बल्कि, यप लैंड। Security here is so visible. I suppose it makes people more comfortable. Most people, anyway. Okay. रेड 38 सेल करना है मुझे अपने। बेच दो ये सारे। 127 ब्रिजर, एक और ब्रिजर है यार, मुझे लग रहा है कहीं पे। ये भी बुरा नहीं है। अब ब्रिजर का इसे बेचो बेचो बेचो। शिट, जितना मिल सकता था मिल गया मुझे अभी। Got anything you need to offload? Trade authorities Not always buying. मैंने ऑलरेडी खर्च कर दिया है और अब पैसा नहीं है उसमें अनफॉर्चुनेटली। और मुझे काफ़ी और बेचने का है मेरे पास। रास्ते में अगर कुछ और दिखा तो मैं देखता हूँ बेचने का। अभी के लिए मेरे हिसाब से मुझे कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर मैं पहले नहीं गया हूँ। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट तो मास चले जाना चाहिए था मुझे। अरे Can I help you with something? Full roof access entrance ना, मैं नॉर्मल एंट्रेंस लूँगा, फिर वो सारे लोगों को यहाँ से निकालूंगा, फिर वैसे करूँगा। You got this. Easy for you to say. Top of the class. Infinity is huge, like staggeringly huge. They need people like you, even with your grades. Yeah, I'm sure a junior assistant is vital. It's your foot in the door. Show initiative, positive attitude, and the sky's the limit. I could see how you made head cheerleader. Go Timberwolves! Welcome to Infinity Ltd's corporate headquarters. Hello. Did you have an appointment with us today? Ah, yes. From Lumen Interactive. The elevator here will take you to the marketing floor. Once you arrive, you'll want to talk to Ellis Ortiz. He's the receptionist there and will be happy to help you. Meet Ellis Ortiz. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जानना है और जनरल ऑफिसेस में मेरे हिसाब से। दो फ्लोर्स जो रेस्ट्रिक्टेड है। लूकस का ऑफिस जनरल ऑफिसेस में होगा, R&D में दो चीजें जो करना है। Welcome to Infinity Ltd's marketing department. Hey, if you just have a seat, I can notify Miss Hart that you've arrived. ऐसे लोगों को अंदर घुसने दे रहे। Wait for Alice to leave. I'll go notify Miss Hart that you're here. Feel free to use any of the facilities on the floor while you wait. The break room and bathrooms are just around the corner. Okay, ये क्या? एकदम सामने खड़ी थी एंड्रेजा। वो क्या उसके उसमें बैठ गई।
इसे डेफिनेटली यहाँ पे छोड़ूंगा। Sabotage. हीटिंग सिस्टम को करना है, इसे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे छोड़ना होगा। Hello. I will keep watch from here. ठीक है, ये वाला नहीं रखना चाहता हूँ। नहीं, हाँ, रूफ एक्सेस, हीटिंग को कैसे साबोटाज करना है? यहाँ से ओके, एक्टिवेट स्विच कर दे। वापस ऊपर आ सकता हूँ ना मैं? ये वापस ऊपर भी आना है मुझे सही में। वो बंदा उधर मैनिपुलेटेड है। The following systems are passed due inspection and require immediate attention. Heating. System inspection is 279 days due. Days past due. Yes. Operating level system active, pressure level high. Nice. Gas leak detected. All non-essential personnel must evacuate the building. Please find the nearest exit and contact emergency services. इधर से आगे बढ़ने का मेरे हिसाब से। यहाँ से ही जाता हूँ, आ गया हूँ तो। और सेव करो। वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ओके, 35 मीटर्स दूर है ये, पर ये गैस का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? यहाँ पे भी दिख रहा है गैस, लकीली इधर नहीं है। पर अरे यार, मैं भूल गया उनके पास होगा वो। ओके, के लिए आगे बढ़ते जाओ आराम से। हिडन हूँ अभी के लिए। इधर से चलते जाओ। लूकस का ऑफिस है क्या जहाँ पे जा रहे हैं अभी? इधर कुछ नहीं है। ओह, उससे मेरी हेल्थ कम हो गई, ध्यान ही नहीं दिया मैंने उसको। अगर वापस जाना चाहते हैं तो रास्ता है इधर से। वेल शिट, नहीं मैं उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहता।
मेरा गैस लीक का है ही नहीं। ओह, शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। Shit. Suspect is on. Okay. चलते जाओ यहाँ पे से। Nope, you do not hear anything. चुप रह सीधे बस। Okay. There. Oh damn. Oh, novice. Huh. और हो गया अंदर वाला। Yes. डिटेक्टेड था ये। इसकी मैं चोरी कर लूंगा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है इससे चोरी करने के लिए। बकवास बंदा है ये वैसे भी। और कुछ है क्या इसका? ये सारे ले लेता हूँ इसके। काफी पैसे खर्च किए होंगे इसमें इन सब के लिए। हाई क्वालिटी। ये डीजीपी क्या? नहीं, और कुछ नहीं है क्या इसके पास? ये रहा ना क्राफ्टिंग कंपोनेंट। ये एक्सपर्ट होना चाहिए। नो, ये भी नॉविस ही है। वाह भी वाह। एक नो, तो फिर ये और ये इसका हो गया, ये और ये। ठीक है। ई actions complete, purging history, purging complete, current user unknown, enacting security override, executing overseer program, searching for files, located files 37, processing file revision, files purge 7, copying files to slate. Okay, वो 7 files मेरे हिसाब से उसके लिए थे, वो मसाको और इमोजन को गिल्टी करने के लिए। Host Nina Hart, location marketing theater. Agenda upcoming ad campaigns, new budget lines, budget review. Agenda status update. Location Lucas Dexler's office. Host Julia Green. Current budget review, end of year projection, proposed cuts and reallocations. ठीक है. There are some unaccounted for expenditure in the executive spending account that I would like to go over with you prior to Green's budget review. Please contact me as soon as possible. ये मेरे हिसाब से वो हायर करने के लिए था Ecliptic को. I was talking to Brennan Hoffman at Starfield, and I think there's a good opportunity here for partnering. Want me to set up a lunch so we can go over the basics? I haven't been able to reach our friends at the clinic. Can you please have someone lean on them? This delay is creating setbacks for the confidential project, and we both know we can't afford them. Chief Research Officer, huh? सब कुछ ले लेता हूँ इससे। बकवास बंदा है ये वैसे भी।
ओके नहीं बीच में ना यहाँ। चलो शुरू करते हैं इसके साथ। ये एक हो गया, अब 2 वाला ऐसा कोई है क्या? हाँ पर ये उतना दूर नहीं है जितना मैं चाहता हूँ। लेस नहीं, ये यहाँ पे है। इसको अगर करें तो हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता ये सही है। ये सही है। बाहर का हो गया, नेक्स्ट वाले का करते हैं। एक दो तीन और इसके साथ सेकंड लाइन भी हो गया। अब लास्ट लाइन बचा है। ओके ओके सारे हो गए। तो अब देखते हैं शुरू किसके साथ करना था? इसके साथ ये और हाँ 16,000। वाह भाई वाह। अरे हाँ ये इस्तेमाल करना चाहिए -30% आवाज वाला। और कुछ है क्या इसका? इसने बस एक ही क्यों रखा यार यहाँ पे? पहले एक से ज्यादा रख देता, मुझे थोड़ा पैसा मिल जाता कुछ भी करने से पहले। 8 नहीं, ये चोरी की है तो वो चोरी वाले में होगा। मेरे डैमेज नहीं। मेडपैक, रेडकॉनिज्म, यस। ये वाला पहले क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ये करता ना। ये चलो अभी के लिए मेरे हिसाब से वापस चलते हैं। ओह बाल बाल बच गया। यहाँ से कहाँ जाना है? इधर ना। मुझे नीचे की तरफ जाना है। तो मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? लिफ्ट का है, लिफ्ट का है। वो है लेफ्ट मेरे हिसाब से। तो वहां से नहीं कर सकता तो फिर थोड़ा आराम से कूद जा। यहाँ से निकलते हैं। जानता था। बे लॉर्ड फिर से करना होगा। इसे सोशल करके इसे फिर से करना चाहता हूँ।
चारा नहीं है क्या? फिर से सेव करो यहाँ पे। ओके, जा सकता हूँ अभी यार जा सकता हूँ, बस संभल के करना होगा। नहीं जा सकता था ऊपर से, तो यहाँ से ही रास्ता ढूंढना होगा। कैसे ढूंढूं यार यहाँ से रास्ता? ओ मुझे मालूम है कैसे करना है। ये दिमाग में पहले क्यों नहीं आया यार मुझे? सही में अभी भी हिडन नहीं हो। यार इधर से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यहाँ से जाना होगा। जाऊं कैसे रिसर्च की तरफ? ये मैंने लेफ्ट का भी ट्राई किया पर लेफ्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता अपेरेंटली। फाइंड अ वे इनटू रिसर्च एंड यहाँ से शायद काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी मुझे, सही बोलूँ तो। ओके Good. हिडन हूँ, हाँ मालूम है। मार्केटिंग और नीचे जाना है, ठीक है। फ्लोर इज रिस्ट्रिक्टेड, एंट्रेंस, ओके नहीं, ये नहीं है। मार्केटिंग में ही ढूंढना है रास्ता, ठीक है। मुझे हेलमेट कोई एक प्रॉपर चाहिए होगा। स्टेटस क्या है मेरा? मिला अटैक्स -30। ये अभी भी 6 मिनट का बचा है ना मेरे पास, ठीक है। यहाँ से ये रास्ता
एक्चुअली ये मेरी तरफ देख रहा भी नहीं है ना, तो अभी इसे अपने कब्जे में करने की जरूरत नहीं है। मैं इधर कूदना चाहता हूँ। Perhaps not the wisest decision. Definitely the wisest decision. Okay. Yeah. We can pause for a moment if you need to recover. ना कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। किसने देखा था पिछली बार यहाँ पे? वो देख पा रहा है क्या मुझे? शिट, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा मुझे लगता है। जाना इधर से है, पर यहाँ पे दो हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं। Shit. वो नहीं करना है। ओह शिट। मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ अगर, तो यहाँ पे दो जो मुझे बाबा देखते जा रहे हैं उनके खिलाफ हो सकता है। Nope. थोड़ा हिडन हूँ अभी, पर जैसे जैसे इधर जाते रहूँगा वो बढ़ते जाएगा। मुसीबत वही है ना, यहाँ से इसे अभी खोल नहीं सकता। ओके वो भाग गए। क्यों? क्या हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओह शिट। या अभी भी पास में नहीं है। कॉशन, पूरा चले जा कॉशन। यार
यार यहाँ से जल्दी से चलो। फ्लॉलेस करना है मुझे। मैंने अब तक सारे मिशन फ्लॉलेस किए, इसे भी फ्लॉलेस करूंगा। उसके लिए इन दोनों का कुछ करना होगा यार। सही में से जा। इधर से नहीं जा सकता हूँ, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वहां से कोई एक तरीका होगा अंदर जाने का। उस तरफ से शायद अंदर घुसने का कुछ हो। उधर कूद नहीं सकता हूँ ना उतना, मुझे उधर तक कूदना है और इतना दूर नहीं कूद पाऊंगा मैं। एक और ट्राई करता हूँ कुछ और। देखिए यहाँ पे भी एक है। इतना अच्छा चांस था मेरा। I don't see anything. अबे यार इधर आजा, इधर आजा। कैसे देख लिया, एक चांस था मेरे पास और मैंने वो बर्बाद कर दिया।
प्लीज 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 नहीं। ओह हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके सबसे पहले यहाँ पे सेव कर दो। बहुत समय लगा ये करने के लिए। एक और बात से ओह पता नहीं कैसे कर दिया पर कर दिया मैंने। न्यू सेव फाइल। करना होगा। ओके उधर पहुंचना है मुझे किस तरह, कैसे पहुंचूं वो समझ में नहीं आ रहा। The hell was that? I'll get the alarm. Shit. Lord. टर्रेट्स भी हैं, टर्रेट्स भी हैं। पहले टर्रेट्स का मुझे ख्याल रखना होगा। Caution. मुड़ जा वापस। अभी के लिए ऐसे ही चलते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे नहीं है ये टर्रेट्स को ऑफ करने का, क्योंकि वहाँ पे हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी। के लिए चलते रहो। अच्छा उस तरफ नहीं था मैं, ऊपर जाना है उस तरफ।
do not like this. I do not like this one bit. हाँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है सही में. सब कुछ चोरी कर लो. क्राफ्टिंग डेफिनेटली चाहिए. इन्होंने कुछ भी नहीं रखा. ओह फक. कुछ ज़्यादा ही फ्रीली हिल रहा था मैं. बबल लेवल नहीं पर ये क्राफ्टिंग कंपोनेंट. और कुछ नहीं रखा है क्या इन्होंने सही में. अब और कुछ नहीं है इसका. एक मिनट ये है ना एम्प्टी चंक्स पैकेजिंग. ये रहा मास्टर. ओके चलो देखते हैं अब. ये नहीं सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले के लिए अगर कोई हुआ तो वो हाँ ये हुआ ना. इसके साथ शुरू करते हैं. 4 वाला कोई नहीं. एक दो तीन. ओके इसके साथ सबसे बाहर वाला हो गया. ठीक है नेक्स्ट वाला देखते हैं. कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले के लिए. ये वाला है ना. ये हो गया और फिर ये हो गया. ये और ये. ये और ये. शिट नो. ये और ये. ये और ये. ठीक है सेकंड वाला भी हो गया. अब थर्ड वाले के लिए ढूंढते हैं. ये रहा. नो फिर ये वाला अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं. ये और ये. और ये ना. ये और ये. नहीं नहीं हाँ ये और ये इसके लिए था. ये और दो के लिए मैंने कौन सा किया हुआ था. यस लॉर्ड. ओके चलो शुरू करते हैं इसके साथ. डिजी पिक मास्टर लेवल. सबसे अंदर वाला है ये. नहीं दो पास वाला चाहिए. वैसा कोई है नहीं. सबसे बाहर वाले के साथ शुरू करता है एक्चुअल में. कोई ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ सबसे बाहर वाले के लिए हो. ये और ये करता हूँ. चलो इससे सबसे बाहर वाला हो गया. नेक्स्ट वाला देखते हैं आप. ये ना. ये फिर 1 2 3 4 वाला कोई है ऐसे. नहीं इसको नहीं करते हैं. एक दो तीन 4 ये हो जाएगा इससे.
ओके सेकंड वाला भी हो गया। फर्स्ट वाले का ये दो, सेकंड वाले का ये दो। अब थर्ड वाला ये कर सकता हूँ, तो ये भी है। ये दो हो गया, फिर एक और दो ना, एक मिनट, ये हो गया। थर्ड वाला भी हो गया इसके साथ। अब बस आखिरी वाला बचा है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। दो वाला है, ये और ये। और ये और ये और ये और ये नहीं, ये तीसरे वाले के लिए कौन सा चाहिए कर रहा था मैंने, ये नहीं है, ये कोई तीन वाला था यार जो मैंने किया था, ये एक था, फिर थर्ड वाले के लिए कौन सा किया था मैंने, ये इस्तेमाल हो गए। ये कंफ्यूज हो रहा हूँ सही में। ये थर्ड वाला एक बार फिर से करना होगा मुझे। एक दो तीन हो गए, फिर ये दो के लिए ये दो ना, ठीक है, ये और ये ठीक है। ये तो शायद नहीं, इससे ये दो हो गए। एक दो तीन वाला कोई है क्या? और ये ठीक है ठीक है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को करता है। ये तीन के लिए मुझे कोई और ढूंढना होगा। एक हो गया, हो गया। ओके फाइनली सारे मिल गए। एक ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये और ये, और इसके लिए ये और ये। Each concept deals more damage, 25 increase. Oh, ये बुरा नहीं है, इसको रखता हूँ मैं। Yes, R&D ID कार्ड yes. These भी ले लो।
काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। वाई स्कूल पर मेले कुछ नहीं करेगा। ओह, ये वाला करना ही भूल गया मैं, जिसके लिए यहाँ पे आया था। अपॉइंटमेंट्स स्टेटस अपडेट है ये। Internal neuromap modification proposals version 5.7 postmortem. I'm putting together the postmortem notes for the meeting. Let me know if I should include the latest results from the cleaning. Best Nils. I want to set up a meeting on our current progress with Project Dominion. I want a new timeline and budget ASAP. We are still on for lunch, right? I have Lonnie and Bella meeting us at Interstellar, so don't be late. We haven't seen each other for months now. Love ya. Okay. ये लंच मुझे लग रहा है उलारू के साथ है। Performance boosting for higher processing load demands due to advancements in robotics. Current report significant result in version 2.7. Noticeable increases in processing speed but significant uptick in heat that we need to counteract. Investigation possibility of prototyping spacecraft operating system to break into spacecraft industry. Wrote up list of requirements for recruiters. We'll need an expert in this field for guidance. Okay. 26 files purged. उतने ज़्यादा उलारू ने रखे थे। इमोजन और बंदी का नाम क्या है ना? वेट फॉर एलिस नहीं, मसाको इनक्रिमिनेट करने के लिए इतने ज़्यादा उसने किया। आगे बढ़ने से पहले सेव कर देता हूँ। के लिए उधर तक तो मुझे लगता मैं पहुंच पाऊंगा, सही बोलूं तो उधर से जाने से तो नहीं, कम से कम। रिसोर्स 5 हेल्थ, धन्यवाद। जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हाँ, नहीं नहीं, 3 हेल्थ, 2 हेल्थ, 5 हेल्थ, ले लिया सब कुछ जो भी हेल्थ वाला है। यहाँ पे जाना चाहिए मुझे शायद, यहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कोई है और नहीं, कोई भी नहीं है। इधर कोई है क्या? लग रहा तो नहीं है। I've got, I don't know what. Going to check it out. Shit. ऐसे धीरे ही जाना है। सिक्योर एक्सेस ये मेरे पास लकीली उसका है। यार मुझे इसका एक्सेस करना है। धीरे कौन देख रहा है मुझे?
ऊपर कोई है क्या? मुझे लग रहा है एक बंदा यहाँ ऊपर है। कौन देख रहा है मुझे? सही में समझ में नहीं आ रहा। Turret. टरेट को करने का कोई ढूंढना है यार। टरेट का यहाँ से कोई है क्या करने का? मुझे वापस जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हो रहा नहीं है कुछ जो मैं चाहता हूँ। यहाँ से शायद ऊपर से वापस जाता हूँ, कोई रास्ता मिल जाए। वेल, अब वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता। नहीं चढ़ सकता वापस ऊपर। चढ़ गया था मैं लगभग। यार चढ़ जा। अब नहीं चढ़ सकता वो तो ऊपर। यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता। कुछ सिक्योर एक्सेस या ऐसा कुछ है क्या इस तरफ? इधर जाऊंगा तो मरूंगा मैं। ये ही एक रोबोटिक्स में मेरा एक भी नहीं है। पीछे भी चेक कर लिया, उधर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर ही कुछ करना है अगर करना है तो। ओ, ये डेफिनेटली लेना है। ये भी एक मिनट। शायद एक रास्ता मिला है मुझे। शायद। Nope, definitely not. चलते रहो, चलते रहो। अरे इधर से नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली।
जहाँ पे जाना है वो मालूम तो है, पर उधर पहुंचू कैसे? रास्ता लगता है यहाँ से ही जाना होगा। वहाँ पे भी एक टर्रेट है। मुझे टर्रेट का कुछ करना है यार। टर्रेट का यहाँ से क्यों नहीं है यार? टर्रेट को बंद करने का इसके पास क्यों नहीं है कोई रास्ता? मुझे वापस ऊपर चलना है यार, क्योंकि मुझे सही में लग रहा है मुझसे मिस हो गया है ये टर्रेट्स को बंद करने का। क्योंकि अगर टर्रेट्स को बंद नहीं करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। इस तरफ बस नहीं देखना उसे। ये रहा कोई और रास्ता है इधर पहुंचने का? ओके, वो तो ऊपर पहुंचना है मुझे किस तरह? ठीक है, ये जब वापस मुड़ जाएगा तब मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ शिट, हो गया था ये। ठीक है, मालूम पड़ गया क्या करना है मुझे। जब ये टर्न करेगा तभी मुझे मौका मिलेगा। यार वैरायटी भाई स्ट्रीम में स्वागत है, कैसे हो? बाइनो भाई भी स्ट्रीम में स्वागत है दोनों का। यहाँ पे एक टर्रेट की वजह से मैं थोड़ा अटका हुआ हूँ अभी। आपका गेम कैसे जा रहा है वैरायटी भाई? और बाइनो भाई आपका भी देखा मैंने थोड़े वीडियोस, ये दनमाची का गेम खेल रहे हो? इंडिया को सलाम वैरायटी भाई। ओह कॉपीराइट आ गया, वाह भाई वाह। एनिमे देख रहे थे या कोई गेम खेल रहे थे उसका?
फिर देखो तो कहाँ पे ये हुआ है। गेम का कॉपीराइट क्यों आ गया? क्या बकवास है वो? एक गेम का कॉपीराइट पता नहीं कैसे आ गया। ये गेम के जो बनाने वाले हैं उन्हें फ्री एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं किया स्ट्रीमर्स से, कॉपीराइट दे रहे हैं बेकार में। एनिमे वाला गेम भले हो या ना हो, एनिमे अलग होता है, गेम अलग होता है। एनिमे देख रहे होते तब समझ में आता वो कॉपीराइट देने का, पर आप गेम खेल रहे हो। ये वो भी है कि जापानीज वाले जो होते हैं थोड़े गेम प्रोड्यूसर्स, वो बहुत ओल्ड फैशन होते हैं। निंटेंडो को ही ले लो, अगर वो उनके गेम स्ट्रीम करना चाहते हो तो उनके किसी एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप के उसमें जोड़ना पड़ता है। सही में तो क्या वो अभी भी है? पर तो कॉपीराइट स्ट्राइक है या कॉपीराइट क्लेम है? बस कॉपीराइट क्लेम है तो मेरे काफी कॉपीराइट क्लेम होता है। और ये भी देख लो, वैसे चांसेस है कि जो कॉपीराइट आपको दिया गया है उस गेम के लिए वो शायद रशिया से आया होगा, क्योंकि मेरे जितने भी कॉपीराइट क्लेम है ना वो सारे के सारे रशिया से ही होते हैं। मैं उनको ध्यान भी नहीं देता हूँ। ओ एक मिनट, अबे यार इसके ऊपर चढ़ जा। I've got... I don't know, but I'm going to check it out. अब वैरायटी भाई, आपके गेम्स कैसे चल रहे हैं? कौन सा शुरू किया था आपने? याद नहीं आ रहा कौन सा गेम आपने शुरू किया था। ब्लास्फेमस 2 के साथ बाद कौन सा गेम शुरू किया आपने वैसे? भूल जा सही में यार। ओ इधर से जंप कर सकता हूँ क्या? अब तक तो मुड़ ही गया होगा। लोड करना होगा। तो वैसे भाई ना भाई, अगर ये नहीं कर पाओगे तो कौन सा गेम प्लान है नेक्स्ट स्ट्रीम करने का? शिट नहीं, क्या अटैक यार? उसने देखा भी कैसे पता नहीं।
नहीं, देखता हूँ। दिमाग में मेरे भी कोई गेम आ रहा नहीं है जो आप शायद खेलना चाहो। आपको कैसे टाइप के गेम्स पसंद है भाई ना भाई? मर जाएगा अब तक। ए यार ये क्या बकवास हो रहा है, कूद नहीं पा रहा हूं मैं। हो गया पहुंच गया। सेव डेफिनेटली सेव। इधर चलो। Turrets deactivated. ये सारे हो गए फाइनली। टर्रेट्स डीएक्टिवेट अब मैं आराम से कर सकता हूँ। आईडी कार्ड रीडर डालो। और यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या? ये क्या बकवास है यार, कहाँ से आया वो? ओके, ये फिर से करो। मुझे लगा था अंदर, ये जल्दी से करता हूँ मैं। डीएक्टिवेट टरेट। सेव। वैसे भाई आपका हफ्ता कैसा गया अभी? पूरा हफ्ता ये यहाँ पे कहीं पे है वो। तो अंदर एक है, एक और बंदा जिसको ध्यान रखना होगा मुझे। इसको करना होगा मुझे, सोशल एक्टिवेट। इसको जल्दी से, जो मुझे करना है जल्दी से करता हूँ, इससे पहले कि ये आ जाए वापस। Don't make things harder than they need to be. आने में क्या? इधर आ जा। आप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट उम्मीद है। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ इस हफ्ते आपके साथ भाई? या सब कुछ नॉर्मल की तरह ही? आजा। यहाँ पे एक बंदा है जो आएगा। एक्टिवेट। इसे एक्टिवेट करो। नॉर्मल
spirits, ये सब ले लो। और कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे करने का, लग रहा तो नहीं है। ओ बाप रे, सब कुछ हो गया है सिवाय इसके। और ये एक्सपर्ट का है, तो फिर ये करते हैं। मैंने भाई अगर आपको भी कुछ इसका सलूशन दिखे तो मुझे बता देना, क्योंकि ये एक्सपर्ट थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत अच्छे, कोई एक ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले के लिए हो। किस्मत इतनी अच्छी है, देखो। ठीक है, ये दो बाहर के लिए। नहीं, ये हो गया। अंदर वाला हो गया, बस बीच वाला चाहिए। दो और एक ना, ये यप, चलो सारा हो गया ये। तो ये करते हैं, 1 2, इसके लिए कौन सा था, ये और ये, और फिर ये और ये। इतना भी मुश्किल नहीं था ये। प्रोजेक्ट डोमेन इंटरनल न्यूरोमैप डिसेबल, यस। ये करना मतलब जरूरी था काफी। अगर ऐसे ही निकाल देता तो एक और अलार्म बज जाता। मैंने भाई आपको ऐसे पजल टाइप्स के पसंद है गेम्स में? पजल टाइप गेम्स, जैसे थोड़ा बहुत ये जो पजल का था। एनकम्बर्ड हूँ वैसे मैं। कितना एनकम्बर्ड हूँ? नहीं नहीं, गलत वाला। उतना ज्यादा नहीं, इनको रखना है मुझे अनफॉर्चुनेटली। और काफ़ी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ भी हेल्थ रिस्टोरिंग वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, 14%। देखो सिर्फ हेल्थ रिस्टोर वाला ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये जैसे कि हाँ, ये भी एक इस्तेमाल करना है मुझे। पोटला नहीं, इन्फ्यूज बैंडेज अभी जरूरत नहीं है। मीट लोफ की भी जरूरत नहीं है। मोची रिस्टोर्स 5 हेल्थ। ये हुई ना बात। रिस्टोर्स 5 हेल्थ लगभग हो गया है। 3 हेल्थ, 3 हेल्थ। सीवीड स्नैक्स एक कहीं पे था ना? रिस्टोर्स 10 हेल्थ। कॉफी, योगर्ट, और ये अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, सही बोलो तो। आप देखते हैं फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होगा। सेव। ये कहाँ पे है बंदा? ओके ओके, निकल गया मैं यहाँ से। अब इनके पीछे से भी जा सकता हूँ।
पजल्स पसंद नहीं आपको? मुझे वो अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स वो तब तक अच्छे लगते हैं जब तक मैं उनसे क्या बोलते हैं मेरा दिमाग नहीं सटक जाता, क्योंकि मैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तब तक मुझे पसंद है। शिट, इधर से नहीं जा सकता। धीरे धीरे नहीं, इधर से बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे इसको अगर उठा सकता हूँ क्या? नहीं, यार छोटे चीजों को उठा सकता हूँ, मैं बड़े चीजों को उठाना चाहता था यार। क्योंकि वापस मैं यहाँ से ही जाना चाहता हूँ, सही बोलूँ तो। क्या? Oh fuck. The hell? 7, 8. ओके, इधर से नहीं जाता, इधर से देखता हूँ जाने का कुछ है क्या। डेफिनेटली नॉट। ओह यार, एक मिनट, स्टेटस देखो। यूकोस कॉफी नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपना वो कम करने के लिए। उसका नाम क्या था यार? नाम की जरूरत नहीं है, ये वाले बस ध्यान रखना है। हाँ, ये रहा ना, पर्सुएशन चांस है ये तो। हेड पैक है ये। यार फिर से एड लो, नीचे जाओ, एक रिकॉन स्टिम लो। और इधर से नहीं यार, इधर से नहीं जा पा रहा हूँ। ये पूरा स्टेल्थ गेम्स के बारे में आपका क्या विचार है फिर? अगर पजल्स पसंद नहीं तो स्टेल्थ गेम्स के बारे में आपके क्या विचार है भाई? भाई वो पसंद है? यार ऊपर से कहीं चढ़ने का है क्या? कोई अब पाइप या कुछ ऐसे? इधर से कोई क्या? शायद हाँ। चलते जाओ। बस पकड़े ना जाऊं मैं इतना करने के बाद। ओ लगभग पहुंच गया हूं वापस पूरा। यहाँ से पहले ही उठता हूँ यार, एक्चुअली अभी नहीं करना चाहिए था।
Shit, caution. उधर से जा सकता हूँ। ओके, ये एंड में जाना था। अच्छा हुआ पहले मैंने चेक करने की कोशिश नहीं की यहाँ पे। मुड़ जा। यस यस यस, हो गया। ओके, इसके अंदर जाके सीधे करते हैं। इसके अंदर जाना कैसे, पहली बात यहाँ से ही लग रहा है रास्ता। Another day, another shift. Apparently that's the law, and it's been in existence from the beginning. Man, you would think something like that would have been changed by now. Someone should really bring it up with the powers that be. No idea किस लॉ की How बात are कर रहे things हैं। going? You just can't. But David's my friend. He writes me. I hate to break it to you, but his PA is the one who signs all those cards and headshots. Mr. Barron's a very busy and important man. David Barron. I came all this way. Listen, I might be able to hook you up with some merch. Maybe get you a ticket to a speaking gig he's got. That's all I can do. You are the best! David Barron is the most famous journalist in the settled systems. इसकी फैन भी आ गई यहाँ पे। डेविड बैरन की फैन यहाँ तक आ गई। तो ये क्या? If you ever find yourself with a hot lead, we will do our best to protect your anonymity. Can I help you? ना, हम तेरी मदद करेंगे। Well, I'll be the judge of that. What's this so-called story about? Corporate greed claims victims once more. And you have evidence to support this claim. If a story doesn't pass a basic fact check, it doesn't air. Simple as that. It's our duty as a news network to maintain a level of trust with our listeners. यार ये आजकल ये नहीं करते हैं। Good. The less investigation we need to put into this, the faster I can prepare the broadcast. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Isn't the truth more important than how it was obtained? हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है। Of course. I just hope your source is as reliable as you think they are. Is there at least a name I can cite as my source? Just a concerned citizen. I know. I think you know the drill here. F anonymous. Concerned citizen, anonymous. Yeah, I think you know the drill here. किसके साथ जाएं? Just a concerned citizen. Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. चलो ये नहीं अब सीधे चलते हैं वापस रियूजिन टावर्स। इसके पास उतना है ही नहीं कि मैं डायरेक्टली रियूजिन टावर्स चले जाऊं। इसकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ानी होगी मुझे। ये अगली बार ये जो शिप है इसका मैं फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाऊंगा यार। लैंड
और इसके साथ इन्फिनिटी एलटीडी हट गई और बचा सिर्फ रियूजन। अगर मैंने उसे कन्फ्रंट किया होता उलारू को तो डायलॉग्स कितने अलग होते हैं, मैं वो सोच रहा हूँ। सेम ही होते बस, या फिर थोड़ा अलग होता। हाँ पता नहीं, मेरे हिसाब से सेम ही होता, बस हर कोई ऐसे एक्ट होता कि उन्हें मालूम नहीं कि उलारू एक्चुअल मोल्ड है, जैसे अभी हो रहा है। और उलारू ऐसे एक्ट कर रही होती जैसे हमने किसी को बोला नहीं। I've yet to hear anything of note on SSNN. Let's hear your report. Good. David won't be able to resist a story like this. He'll do some preliminary confirmations, which will be enough to get the broadcast out to the public. And how did the neuroamp perform? ये सही नहीं है। एक बार तो इस्तेमाल किया मैंने, अब वो एक बार ये। That's unfortunate. Although a true testament to your skills as an operative. झूठ बोला मैंने अभी। I can see how relying on such technology may not be for everyone. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. Infinity Ltd and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barrett for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom, so this gives us the opportunity to win a little more public faith. Quite right. The truth is, we'll be making evaluations. We'll shed any employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. I suppose it is all very simple when you do not consider the impact on actual human lives. Just your bottom line. राइट थिंग फॉर वंस नहीं। मुझे पिछली बार जब वो ऑप्शन दिया था ना कि इस्तेमाल करने की न्यू रैम, मुझे आखिरी वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए था कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता। एंड्रेया को वो डेफिनेटली पसंद आता। It is the right thing for Ryujin, which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right move. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help sway them. No? Yes, that's exactly what it's designed for. The bright side being, they'll never know. मैं अपने persuasion के साथ करूँगा। Fine. Whether or not you use the internal neuroamp is up to you, but I still want results. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is also here, waiting for the meeting to start.
We'll need at least 50% of the vote to go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. 12,000, nice. A level up भी. किसको करूं? ये फुल हो चुका है. स्नीक अटैक भी है पर इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से. पर ये लूँगा मैं. बूस्ट पैक चाहिए मुझे. नाइस. उलारू. हाँ, इससे पहले कन्विंस करते हैं. Internal neuromap or Infinity Limited? Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity Ltd? I think we both know that's not going to work. You can make light of the situation, but my stance won't change. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. This is exactly why Masako's time as CEO is finished. I'll overlook your poorly educated statement. For now. Throwing your competitor a lifeline when they're about to crash and burn hardly seems wise. Nope. The corporate world will hear SSNN's story and believe Ryujin exposed Infinity because they stole from us. It sends a strong message. But acquiring Infinity could be interpreted as a safety net. Infinity tried to screw us over, yet they still survived. We need to be sending a much stronger message. If you mess with Ryujin, we'll shut you down. Period. Ryujin Industries isn't a corporation built on heart. I think you know that. Persuasion का क्यों नहीं है? The benefits may exist, but the message will be stronger. As long as everyone has Ryujin's best interests in mind, this should make for an interesting meeting. An issue? That would be a foolish move. Dalton and Alexis are the only two against it. You'd never get the rest to shut it down. Oh, dude. Please. Ryujin's best interests are long-term success and growing profits. The internal neuroamp provides both. Now, if you'll excuse me, I still have a lot of preparations to make. इसका तो वैसे भी गारंटी था. अनलेस मैनिपुलेशन इस्तेमाल करो वो उसे कर ही नहीं पाते हम. कोई चांस ही नहीं था. चलो इसको कन्विंस कर सकते हैं. एलेक्सिस डेफिनेटली उसके अगेंस्ट है. So much work to do. Well, if it isn't my favorite operative, something I can help you with? Not a fan. Not much to discuss there. I believe I've made my case quite clear to Masako on why I am against it. All right, I could use the entertainment. Finally. Tell me why Infinity is a good asset. ये है ना. The downsides of acquisition only fall on your department. हाँ. One thing I definitely know is that you are starting to annoy me. Shit. I suppose I might be overreacting a little. No. I do care about... No. I've heard enough. If you only...
No. Unfortunate. Don't even get me. First off. नहीं मैं I'll do whatever. Well, that is... Well, I'm both glad. Masako is... You may be. This exchange... Okay, finally. Load. Yes. चलो इसको करते हैं फिर से. If only there were more hours in the day. Well, if it isn't my favorite operative, something I can help you with? You heard correct. I've every reason to believe that Infinity Ltd is the Pandora's box of corporations. All right, I could use the entertainment. Tell me why Infinity is a good asset. Why else do you think my department is so successful? I see what you're doing. And I suppose it's working. A little. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. No. If you want a real legal nightmare. और पहले? Unfortunately, half my department's been poring over documentation, while the other half is writing up what legal guidance they can. If you want, सही में ये बहुत बड़ा legal nightmare हो सकता है न्यूरोएम्प, internal न्यूरोएम्प especially. Don't even get me started. First off, if I find out you used that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. Well, that is one very clear position. I agree with you. Well, I'm both glad and surprised to hear the one person who has one say that. Masako is lucky to have you at her disposal, you know? You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. This exchange has been surprisingly insightful, but now I really do need to get back to my notes. Infinity, yes, दो चाहिए. Could we talk? अभी नहीं, ये पूरा खत्म करने के बाद. Okay. It's good to see you again. Same. Yes. Okay, Genevieve. मेरी मदद कर. Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Because that's what I do. You want something in this business? You don't pull any punches. The only real question is just how persuasive she asked you to be. Well, you can let Masako know to rest easy. It just so happens that her agenda lines up with mine. You just need to grab Infinity Ltd while it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. ये internal neuroamp के बारे में बात करना चाहता हूँ. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. Yeah. All right. I suppose you've earned the right to voice your opinion after everything you've done, qualified or not. Persuade, please. So let's hear it. Yes. The possible backlash on tech like this is not lost on me. However, the internal neuroamp will define the next era of tech, with Ryujin at the forefront. It's not an opportunity you just walk away from. No. Not when you word it like that.
But a product that can settle disputes or help broaden someone's point of view? Then you really have something that consumers will buy into. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Good talk. Maybe I'll even consult you on future endeavors. Shit, yeah, इसको प्रेसिड करने I have things I wish to discuss with you when you have time. Oh यार, ये सही नहीं जा रहा है. ये कुछ भी हो जाए पहले सेव कर दो एक्चुअली. ये इंटरनल न्यूरो एम के लिए होगा डेफिनेटली. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred outcome. Good on you. It would be almost fitting to see the technology immediately turned on those who fostered its creation. No. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. Yes. I knew it was a grave security risk, and look what happened. You read my mind. Let's just hope Masako and the others see it that way. Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd, we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. I imagine we're looking at months of work. Infinity Ltd is obviously not known for their security. I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you excuse me, I have some preparations to make. We'll be announcing Ularu's termination of employment at this meeting, so I need to have security ready to escort her off the premises. Okay, बाकी दो को मुझे convince करना है ये बाद में internal. Oh shit, नहीं. ये definitely उसके खिलाफ नहीं करेगी vote. And how's my favorite patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing time, I hope. Oh, well, at least tell me what you think of the neuroamp. I do not like it. I hope you're not actually suggesting that the technology I spent years working on and perfecting never sees the light of day. Yes, that's what I am. This is groundbreaking work. My life's work. Fine, fine. Make your case. Yes. Oh, there is adequate data to back what you're saying. More than adequate. Well, this conversation's made me feel like a proper monster. But you're right. In a perfect world, tech like this is used for good. But this world is far from perfect. It is. It really is. For years, my only focus has been, is this possible? And then, how do I make it work? I never stopped to consider if it was right, or what it would mean. I guess it'll be up to a vote either way. It's not on the meeting agenda, so I assume you'll bring it up yourself? Yes, I will. We just have to hope the others will see reason. So the next question is, what will the fate of Infinity Ltd be? Alternate by stream में वापस स्वागत है. That's what I'm hoping for. They may be the underdog, but that doesn't mean they don't have a brilliant mind or two. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. If you have the time, I wish to speak to you. ये quest खत्म करने के बाद. अब ऑल्टरनेटिव भाई ये क्या स्माइलीज चेक कर रहे हो क्या इसके? YouTube के स्माइलीज. मैं बस इतना कहूँगा YouTube स्माइलीज के बारे में कि वो एटलीस्ट ट्विच के जो नॉन स्माइलीज हैं जो स्ट्रीमर्स बनाते हैं वो नहीं. नॉन स्माइलीज से उससे ज़्यादा कलरफुल है और थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं.
ट्विच के जो स्माइलीज होते हैं वो तो लगता है कोई एक मरा हुआ बंदा हो, वो स्माइल कर रहा है, कोई मरा हुआ बंदा, या फिर पूरा जो बोलते हैं ना अनडेड, वो स्माइल कर रहा है, वो फ्राउन कर रहा है, वैसे लगते हैं ट्विच के मुझे। ओके चलो काफी बात हो गई। Interesting today. बस इसे कन्विंस करना है मुझे। Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. An efficient exchange, then. You've had the chance to encounter members of Infinity LTD throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? इतना बोलूंगा, गेम प्ले ओके है, यूआई मुझे पसंद नहीं है इसका। ये नॉर्मल ऐसा वाला यूआई नहीं, ये जैसे इन्वेंट्री, मैंने ये पहले भी कई बार बोला है, इन्वेंट्री वाला यूआई या फिर शिप वाला यूआई वो कम्बरसम है, बेसिकली स्मूथ नहीं है वो, जो उधर जाने के लिए। वो मेरा एक ही बोल रहा हूँ, सही बोलूँ तो, कि वही है जो मुझे पसंद नहीं आया अब तक इस गेम में। और बीच बीच में कभी कभी ऐसे लगता है कि फ्रेम ड्रॉप भी हो जाते हैं, पर ठीक है। मैंने कभी स्मूथ 60 FPS गेम्स खुद ही नहीं खेला है कभी भी। PS5 में भी खेलता हूँ तो मैंने खेला 30 FPS मैक्स टू मैक्स ज़्यादातर, उसमें भी 60 FPS वाले ज़्यादातर गेम्स आते नहीं हैं, तो FPS पे चलता है, ठीक है, नीचे जाए चलता है। Were you going to say something? पर अगर वो FPS वो उसे छोड़ दो, FPS का छोड़ दो, तो सिर्फ वो UI वो वाला मुझे पसंद नहीं आया। ये बोलने की जरूरत है। Saving the jobs of thousands is altruistic, which is not a luxury corporations have. It's a financial burden. It would be a huge undertaking on my part. No. That is a plea more well spent on Genevieve or Alexis. I prefer to focus on the numbers and leave emotions out of my decision-making. Perhaps I wanted to see if I could be convinced otherwise. मुझे persuade का option ही नहीं दे रहे। It's the right thing to do for someone in your position. But for me, Infinity LTD is a huge financial unknown. It's high risk versus mediocre reward. Your disdain is noted. And perhaps you thought I'd care because you're hopeful. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? And why do you feel it was well handled? Please note I'm not disagreeing. 4090 का ही अच्छा यूज कर रहा हूँ, इसलिए तो जितने FPS मिल रहे हैं उतना ही काफी है। Being prepared for anything is a great asset, one that Masako excels at. पर हाँ, इसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम है। There's anything I can do for you, considering how helpful you've been. Yes. It's only dangerous to those who can't afford one. Hence the added motivation that will bolster sales. No, no, no. Ah, your companion. I would be interested in another perspective. You're naive if you think tech like this will remain under control. आज रात क्या खेलने वाला हो? Think of the neuroamp in the hands of a Varun zealot or Crimson Fleet pirate. It is not a matter of if it will happen, but a matter of when. Will you be equipped to handle the repercussions when that day comes? What makes you so certain this is inevitable? Not that I doubt the scenario. SWH क्या होता है? Simple. It is human nature. Nuclear weapons, chemical warfare, xeno-warfare, mechs. Enemies and competitors will get their hands on this tech eventually and reverse engineer it to use however they see fit. I admit, you've properly pushed my concerns. AH कहीं पे नहीं दिखला तो एडॉल्फ हिटलर तो नहीं है।
Your friend कोई here is idea नहीं quite कौन सा है। convincing. The internal neuroamp does indeed come with risks, none of which I am inclined to take anymore. This has been rather enlightening for me. I appreciate the time. सब कुछ सही गया। I would like a chance to talk to you, if you are able. ऑलराइट भाई, आपके लिए आपने तो कहा था कि बेस्ट गेम एवर है। एडोल्फ हिटलर सेक्स गेम बोला था या क्या बोला था? एडोल्फ हिटलर लव गेम, पता नहीं कुछ। अब ये SWH में मुझे ना तो A दिख रहा है, H दिख रहा है, पर A नहीं दिख रहा, तो ये बेस्ट गेम एवर हो ही नहीं सकता। फुल फॉर्म क्या है SWH का? चलो मेरे दिमाग में WH जब भी देखता हूँ वर्क फ्रॉम होम मेरे दिमाग में आता है। ऐसे श्योरली वर्क फ्रॉम होम। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये सेम गेम ही है। समझ में आ गया, सेम गेम ही है, हिटलर का ही, सेक्स विद हिटलर, वही गेम। सही है। खेलते रहो सही में। सही में फिर से वो ट्राई करोगे क्या उस बॉस को? ये तीसरा स्ट्रीम होगा ना? ये बंदे का बॉस का नाम अजीब सा, मुझे अभी भी याद नहीं है। कोरल बॉस, मैं उसे कोरल बॉस ही बोलूंगा। उसका असली नाम कुछ CL240 या ऐसे ही कुछ है, अजीब सा, क्योंकि ऑफकोर्स उसे प्रॉपर नेम नहीं दे सकते। वो एक मैक है, मैक वाला नाम, अजीब सा नाम दे रहा है, CLCI कुछ। सही है, चलो बैठते हैं यहाँ पे अभी। और कोई है ना? अब इमोजन नहीं है क्योंकि वो छुपी हुई है। All right, everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human आज क्या देखने का इरादा है YouTube में? for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. पिछली कल Ryujin will be launching a डार्कनेट का देखा था, आज क्या? I believe now is the perfect time to Interpol. acquire Infinity Ltd. The operative is right. Legal ramifications are a certainty, but the benefits far outweigh the disadvantages. Arguments? Infinity Ltd could be the Pandora's box of financial and legal risks. मैं सोचता हूँ थोड़ा स्ट्रीम जब तक शुरू होता है आपका, मैं ये खत्म करने के बाद बंद कर रहा हूँ। Our competition, not rescuing them from their own flaws. This is a weak decision, Masako, and you know it. In fact, I move that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer.
To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be Black holes के बारे में थोड़ा देख लो वैसे. Reviewing the evidence closely, but this isn't something you just get to walk away from. Security, escort Miss Chen to her office. Black holes कुछ ज़्यादा ही common है. एक का ज़्यादा अच्छा होगा neutron star. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity Ltd? Aye. All against? Nay. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? Yes. The internal neuroamp is a key component of Ryujin Industries' success for the next 10 years, if not more. Why would we shelve it after we've finally perfected it? The moment ये नहीं, there are many moral I can't believe I'm saying this, but he's right. Regardless of the pros, the cons are too morally and ethically irresponsible to move forward with. I must agree. We can't go through with production on technology like this until certain safeties can be guaranteed. Very well. All in favor of shelving Project Dominion? Aye. 4 है मेरे पास. Nay. Vina, prep Project Dominion for storage. Any other matters to bring forth? मेरे हिसाब से नहीं. None? This concludes our order of business for today. सही. मुझे लगता मसाको खुश होगी. खुश होगी कि हमने इसे शेल्फ किया. प्रोजेक्ट डोमिनियन को. Operatives really will wear anything. और सही में मुझे कहाँ है? Neon business wear. Shelving the internal neuroamp. Not the outcome I anticipated. A fine point, but it still proves its usefulness. The truth remains, Lucas Drexler learned a hard lesson, and we exposed a traitor among us. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. I suppose it is. Gratitude isn't something you typically hear these days in the corporate world. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. There was no honor in Ularu's plan. It did not deserve to succeed. Not often, and certainly not to this degree. We have the occasional employee consider selling information, but thanks to our security and operations teams, we always catch them before any damage can be done. This was the first time anyone from either department was involved. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. अच्छा पैसे देना. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it.
As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. 350 और कितने क्रेडिट्स मिले? 5000 और 8400. I'd like a chance to talk to you, if you are able. एक मिनट रुकना. हो गया ना ये? अभी यप हो गया. और अब ये मैं प्रॉपर वाले पहन रहा हूँ अपने सारे. चलो ये पूरा. ओ डॉक्टर इमोजिन. ओके ये सेपरेट मिशन है, वो बाद में करूँगा. अभी इस एंड्रिया का करते हैं. I have been thinking about what we talked about before. The idea of purpose in one's life. You agreed with me that true purpose can be a driving force in life. I found that comforting, but something has been nagging at me since. I have been single-minded in my pursuits. I have always believed the decisions I made were necessary, that there was no other option. I have sacrificed much to be where I am now. And I'm starting to wonder if it has been worth it. It's okay to have doubts. Yes, सही है बोल. Doubts have never been something I would consider. I have told you that I am not one to discuss my past. And yet, no, that is not what I am trying to say. I promised to provide for my family. That meant working with smugglers to procure supplies we could not acquire any other way. मैं वो रिग्रेट के साथ जाना चाहिए था. Life away from my home, jumping from one planet to the next, living in dangerous conditions, often surrounded by violence. This is true, but I have only experienced my own. I was convinced from the beginning that it was unwise to let anyone get too close. I had, maybe not quite friends, but people I cared about. Yet there was always a distance I could not reach across. I often find other people complicated and confusing. It seemed easier to not become attached, especially when circumstances meant I might never see them again, with no warning. Until now, I have disagreed strongly with that idea. But therein lies my concern. What I am trying to say is that I now wonder whether it has been the right decision to distance myself from others. I'm here for you if you need me. या फिर ये. I appreciate that more than you know. If you have the time, I wish to speak to you. बात तो किया मैंने अभी तुझसे. I suppose now you can add climbing the corporate ladder to your list of accomplishments. I think it is perhaps for the best that the research program will come to an end. Where that neuroamp technology could lead, there are many bad outcomes. Too many. It almost certainly would be a disaster. No one should have that degree of control over others. Except you, perhaps. You do still have one in your head. I consider this to be a much safer outcome than nearly any other.
And before you joke, yes, that is a compliment. And if you are the only one with this neuroamp, I know exactly who to keep an eye on. Plot option मिलेगा शायद. You keep that in mind. Plot का option मिलेगा With शायद. the neuroamp matter settled, we should move on to other things, yes? Okay. Yes, हो गया इसका. ये कौन सा मिशन है अभी करंटली? टॉक टू व्लादिमीर. वो नहीं करूँगा अभी. मैं क्या अभी पहले सेव करूँगा यहाँ पे. और अभी के लिए सही बोलूँ तो स्ट्रीम यहाँ पर ही बंद करता हूँ. मुझे अपना वीडियो अपलोड भी करना है, उसका थंबनेल बनाना है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डालना है. भले ही वो टाइम स्टैम्प्स पता नहीं क्यों दिखते नहीं है वीडियो में. क्या प्रॉब्लम हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. पर वॉल्टन भाई, बाइनो भाई, वैरायटी भाई और उसके अलावा जो कोई भी स्ट्रीम में जुड़े, आज स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वॉल्टन भाई, मैं आपको थोड़े वीडियोस थे साइंटिफिक वीडियोस जो मैं खुद देखने की सोच रहा था, वो थोड़ा फिर से याद करने की कोशिश करता हूँ, फिर वो आपको स्ट्रीम में बताता हूँ. स्ट्रीम में मिलता हूँ आपसे, और बाकी सबको मैं आपसे कल मिलता हूँ. तब तक के लिए अलविदा.